Hello everyone, my name is Dr. Sonal Rajpal. Today I am going to explain what is refraction of light. So before going to start with the refraction of light, I want to explain which I was already explained in my previous video, what is light. मैंने आपको जैसा बताया था in last videos, light is a form of energy. एंड द एनर्जी ऑफ द लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. हर एक लाइट का स्टूडेंट्स एक एनर्जी होता है और जो एनर्जी ऑफ द लाइट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है. फ्रीक्वेंसी यू हैव टू एज्यूम लाइक अ स्पीड, मीन्स लाइट का एक वेव नेचर होता है. व्हेन द लाइट ट्रेवल्स इट प्रोड्यूस वेव्स. तो जो भी लाइट का एनर्जी ज़्यादा होगा इट विल प्रोड्यूस मैनी वेव्स इन 1 सेकेंड. तो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी. तो यू हैव टू सिंपली रिमेंबर वन थिंग, जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा. एंड एवरी लाइट हैज़ अ वेवलेंथ. जिस लाइट का वेवलेंथ बिग होगा उसका एनर्जी कम होगा. वेवलेंथ इज लाइक अ फुट स्टेप, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था जिस बच्चे का फुट स्टेप बड़ा होता है उसका एनर्जी कम होता है और जो बच्चा जितना ज़्यादा तेज़ रन करता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है. सो एवरी लाइट हैज़ टू करेक्टरिस्टिक्स. एनर्जी इज proportional to frequency of light and energy is inversely proportional to the wavelength. And we can see the world around us in visible region. और visible region में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था it has 7 colors vigor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, and the combination of all these 7 colors will make a white light. And वाइट लाइट हैज 7 डिफरेंट कलर्स और इन 7 कलर्स का डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, डिफरेंट एनर्जी है और इनका डिफरेंट ही वेवलेंथ है. बिकॉज वेन एवर वी आर मूविंग फ्रॉम वॉयलेट टू रेड मीन्स वेन एवर वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एनर्जी ऑफ दीज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट डिक्रीजेस. मीन्स रेड लाइट का एनर्जी सबसे कम होता है, उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, बट उसका वेवलेंथ सबसे बिग होता है. बिकॉज हमने बताया था स्टूडेंट, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. जितना वेवलेंथ बिग होता है, जितना एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का फुट स्टेप बड़ा होगा, यू हैव टू अज्यूम इट कैन रन फास्ट, इट कैन ट्रेवल फास्ट. दैट्स वाई रेड लाइट का वेवलेंथ इज लॉन्गर. सबसे बिग वेवलेंथ रेड कलर का होता है. तो इट मीन्स एनवायरमेंट में, एयर में रेड कलर ट्रेवल फास्ट, सो द डेंजर ऑफ सिग्नल इज ऑलवेज रेड एंड रेड लाइट का एनर्जी हमेशा कम होगा. और जो वॉयलेट कलर होता है इट इज़ अ वेरी डार्क कलर, मीन्स एनर्जी इज मोर, फ्रीक्वेंसी इज मोर एंड द फुट स्टेप और यू कैन से वेवलेंथ इज स्मॉल. स्टूडेंट आपको एक बात याद रखना है, जितना डार्क कलर्स होता है उनका वेवलेंथ स्मॉल होता है, उनका एनर्जी जो होता है वेरी हाई एंड उनका फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो वेरी हाई. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर वॉयलेट लाइट हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ, it can travel slow because उसका फुट स्टेप छोटा होगा and it has highest energy because it is a very bright color और उसका energy ज़्यादा, frequency ज़्यादा. And all the 7 colors of this Vibgyor has different frequency as well as different wavelength. And light, I have told in my previous video also, light can show 2 phenomena. One is reflection of light and one is refraction. Reflection I already explained in my previous videos. Please see that videos in my YouTube channel. And you know, reflection can be shown by the opaque object. Opaque मतलब जिनसे लाइट आर पार नहीं जाता बेटा, तो वो हमेशा मिरर्स होते हैं. और रिफ्लेक्शन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट शो करते हैं, मीन्स जहाँ से लाइट आर पार, जहाँ पर लाइट क्रॉस कर जाता है, और वो हमेशा लेंसेज होंगे. और मिरर्स में हमने अगेन लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, वी टॉक अबाउट प्लेन मिरर्स, वी टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, हाउ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय दीज 3 mirrors because they all are opaque and they show the phenomena of रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और हमने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इमेजेस कैसे बनता है ये मिरर्स में. और हमने ये भी बताया था रिफ्लेक्शन इज जस्ट लाइक अ बाउंस बैक. जब भी कोई भी लाइट किसी मिरर पे पड़ता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे पड़ता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसी पॉइंट पे जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं. और हमने ये भी बताया था स्टूडेंट्स, इमेजेस कौन बनाता है?
reflected rays. So the images formed by these three mirrors based on the reflection of light, I already explained my previous video. Now here I am going to talk about the lenses. Lenses are the transparent object. They show the phenomena of refraction of light. So one thing, before going to start with the lenses, I want to explain what is refraction of light. ये refraction होता क्या है? So जब भी हम refraction of light के बारे में बात करते हैं, we need to require a two media. Means आपको दो मीडियम चाहिए. हम यहाँ पर ये कंपेयर करते हैं, there is a change in the path of light. There is a change in the path of light when the light goes from one medium to another medium. बेटा जब भी मैंने बोला है लाइट का डिफरेंट स्पीड है, डिफरेंट एनर्जीज है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ. सो जब भी ये लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में एंटर करता है तो उसका स्पीड पे क्या चेंज आता है. अगर स्पीड इज चेंज तो इट मीन्स उसका पाथ इज चेंज. एंड यू नो इन दिस रिफ्रैक्शन of light as per the class 10th, so we have three type of mediums. One is solid medium, one is liquid medium, and one is gas medium. So first of all, what is a solid medium? Solid medium वो medium होता है, जैसे example is glass, in which the particles of these mediums are tightly packed. एंड लिक्विड मीडियम वो होता है जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होता है, और गैस मीडियम वो होता है जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर होता है. ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है. सॉलिड मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी टाइटली, मीन्स इट इज़ अ वेरी डेंसर मीडियम. नाउ यू टेल मी स्टूडेंट्स, अगर आपके पापा को अगर कार चलाना है और इफ़ इट इज़ अ सिटी, इट इज़ अ वेरी ह्यूज डेंसिटी, मीन्स बहुत रश है. You just assume density means if there is a very great rush on the road. So do you think your papa can travel your car fast? No. Likewise, जब भी particles of the mediums are very tightly, particles बहुत close होते हैं, it is very difficult for the light to travel in that medium. Light का speed automatically slow हो जाता है. जैसे आपका पापा का speed सिटी में बहुत स्लो हो जाता है. और रेयर मीडियम वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी लेस एंड इट इज़ कंप्लीट. जैसे आपके पापा जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो उनको पूरा फ्री रोड मिलता है, पूरा खाली रोड मिलता है. तो द स्पीड ऑफ योर फादर कार इज़ वेरी हाई. लाइकवाइज रेयर मीडियम में लाइट कैन ईजिली ट्रेवल, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी फास्ट. तो अकॉर्डिंगली रिफ्रैक्शन भी एक ऐसा फिनोमेना है कि जब भी लाइट डेंसर टू रेयर होगी तो लाइट के स्पीड के में चेंज आएगा, तो उसके पाथ में चेंज आएगा. तो सॉलिड मीडियम्स आर दोज मीडियम्स इन विच द पार्टिकल्स आर टाइटली packed. So the speed of light is slow as the forces of attraction between the particles of the solid medium is very high, and or the path of the light get changed. Likewise in liquid medium, the particles of the medium are too far and it has less force of attraction, so the speed of light is fast as compared to the solid medium. So the path of the light is also changed in this liquid medium. So the gas medium is that mediums in which the particles are very far off and there is no force of attraction, there is no rush on the road, है ना, like highways. So the light can travels very fast in this gas medium, which is called as rarer medium. So in based on this, I can say there is an increase in the density of medium as follows. Solid medium is a very denser medium and the gas medium is less denser among all three, or you can say gas is a rarer medium. So the speed of light is very fast in gas, then in liquid and then in solid. और हम ये भी कहना चाहेंगे, so there is a decrease in the speed of light when you goes from gas to liquid and then to solid. Now the question comes in your mind, what caused the refraction of light? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट जब भी लाइट के पाथ में चेंज होगा. और लाइट के पाथ में चेंज कब होता है, उसके लिए आपको कंपैरिजन के लिए यू नीड टू हैव अ टू मीडियम्स एंड डिफरेंट लाइट का डिफरेंट एनर्जी होता है, उनका डिफरेंट फ्रिक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ होता है, उनका स्पीड डिफरेंट होता है. और जब डिफरेंट मीडिया में ये लाइट ट्रैवल करता है तो उनके पाथ में चेंज होगा. देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम one medium to another medium. So the causes of refraction of light is due to the change in the speed of light.
when it is growing from one medium to another medium. Students, रिफ्रैक्शन हम तभी जज कर सकते हैं whenever you have a pair of medium. आप कंपैरिजन तभी बोल सकते हो, जैसे आपके पापा सिटी से गाड़ी हाईवे पे चलाते हैं तो सिटी में गाड़ी का स्पीड कम होता है बिकॉज इट इज़ अ डेंसर मीडियम, आपको ऐसा एज्यूम करना है। और जैसे आपके पापा हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं ऑटोमेटिकली गाड़ी का स्पीड इंक्रीज होता है, सो दैट इज अ रिफ्रैक्शन। देयर इज अ चेंज इन द path of your car of your papa when the papa is driving from the denser to rarer or rarer to denser. So the speed of the light changes when it goes from denser to rarer and vice versa, which causes refraction of light because different mediums का different density होता है, इसलिए speed of light is different in these medium, उसके light के path में change आता है, so that is called as the refraction phenomena. Here I explain when the light goes from air to glass, because air is a rarer medium and glass is a denser medium. So there is a change in the path of light because the speed of the light is reduced when it goes from the air to glass, because glass is a denser medium. And when the light moves from glass to air, there also there is a change in the path of light because glass is a denser medium. The speed of the light in glass is very less, and when these light will enter into the air, the automatically the speed of the light in air is increased. So there is also a change in the path of light when it goes from the denser to rarer medium, so that is called as a refraction. And greater the difference in the speed of the light in the two media, तो greater will be the amount of refraction of light. Students, आपको ये बात याद रखना है, जब भी आपको रिफ्रैक्शन को समझना है तो आपको टू मीडिया होगा, बिकॉज आप तब भी कंपेयर कर सकते हो लाइट के पाथ में कितना चेंज आया है, और डेंसिटी ऑफ दीज मीडिया इज ऑल्सो डिफरेंट. And medium again I categorize as rarer medium and denser medium. Rarer medium वो medium होता है like gas, in the particles of the medium is too far, the light can easily travel. The speed of light is very fast in gas. डेंसर मीडियम वो मीडियम्स होते हैं लाइक सॉलिड मीडियम, ग्लास स्लैब, जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी टाइटली पैक्ड. द स्पीड ऑफ द लाइट इज very slow. Light is very difficult to travel in the denser medium. And what is optically rarer medium? A medium in which the light travel fast, means the speed of light is more, it is called as the optical rarer medium, or you can say it is a less dense medium. For example, air. Light can travel fast in air, and the speed of light in the air is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. And what is optically denser medium? A medium in which the speed of the light is less because the particles are very tightly, it is difficult for the light to travel. That is called as the optical denser medium. The example is glass slab. And the different cases of the refraction of light I am going to explain here. Here I am going to use two media. One is rarer, one is denser. So now I am going to tell how the path of the light get changed. So here when the ray of light goes from the rarer medium, example is air, to denser mediums, so it bends towards the normal at the point of incidence. I'm going to explain here. This is a glass slab which is a denser medium, that A, B, C, D. So this is a surface on which AB is the surface on which the light will fall. And I am saying the normal is always perpendicular to this surface. This is a normal. Normal is always imaginary and normal हमेशा perpendicular होता है. It will make a 90 degree angle with the surface. जब कोई भी light, if you have assume if any light, when it will fall on this AB surface, the light which will fall on this AB surface, that is always an incident, right? And the point at which it falls, it is called as the point of incidence, and the angle made by the incident ray with the normal, that is called as the angle of the incidence.
और जब ये इंसिडेंट रे, because this is a air is a medium which is a rarer medium, when this light will enter into this glass slab, so there is a change in the path of light because this is a denser medium. So here you can say the change in the path of light means this that is called as the refracted rays, means this refracted light will bends towards the normal. हम अपने स्टूडेंट्स को ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, दिस नॉर्मल यू हैव टू अज्यूम इट इज़ एज अ योर मम्मी and you are holding the finger of your mummy and this is you guys, this is a student. जब स्टूडेंट अपनी मम्मी के साथ फिंगर होल्ड करके चलता है तो द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद द इंसिडेंट रे दैट इज कॉल्ड एज द एंगल आई. और जब स्टूडेंट्स आप अपनी मम्मी के साथ किसी रश वाले एरिया में एंटर करते हो तो यू विल जस्ट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. आपको डर लगता है और आप अपने मम्मी के क्लोज आ जाते हो. सो देर इज अ change in the path of same refracted light. This refracted light will bend towards the normal and this is called as the angle of refraction. The angle made by the incident ray with the refracted ray, जो ये path change होता है उसको refracted ray बोलते हैं. Students, here you need to remember one thing, जब भी कोई light rarer to denser medium में enter करता है तो जो रिफ्रेक्टेड लाइट होती है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल के पास आ जाता है. और आप ऐसा सोचो जब आप अपनी मम्मी के साथ बहुत खुले खुले एरिया में एंटर करते हो तो आप अपनी मम्मी का फिंगर पकड़ के चलते हो तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाई बिकॉज आपकी मम्मी और आप में बहुत गैप होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जब यही आप किसी रश वाले एरिया में एंटर करते हो तो आप डर जाते हो और ये भी कह सकते हो जितना भी वो रश में आपको लोग धक्का मार के आपकी मम्मी के पास कर देते हैं तो यू जस्ट बी बेंड टूवर्ड्स योर ममा. तो दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस. जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और यू ऑल्सो कैन से एंगल ऑफ incidence is not equal to the angle of refraction like in the reflection जो हमने mirrors में किया था. The case number 2, when the light is moving from the denser to the rarer medium then it bends away from the normal at the point of incidence. Again I am taking the example of glass slab. This is a A, B, C, D is a glass slab. This is the denser medium. It is a transparent. So this is a normal over here. Normal is always perpendicular to this surface CD. This is a normal. And if the light is coming out from this glass slab, so this is a light incident ray which is fall on this point. This point is called, C point is called point of incidence. And the angle made by the incident ray with the normal, it is called as the angle of incidence. और जब ये light, incident light इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है स्टूडेंट्स, it will bend away from the normal because the light is moving from the denser to the rarer medium and here the rarer medium is an air. So the angle made, and this is a refracted rays I can say, and the angle made by the refracted ray with the normal, it is called as the angle of refraction. Or here the angle of refraction is greater than the angle of इंसिडेंस. स्टूडेंट्स ये ऑपोजिट केस है. अगर आप किसी रश वाले एरिया में मम्मा के साथ चलते हो है ना, दैट इज एंड द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विद द इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और अगर आप किसी खुले खुले एरिया में एंटर करते हो तो आप मम्मा से दूर हो जाते हो. तो लाइक वाइज ये जो रिफ्रेक्टेड रे है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जब भी कभी भी कोई लाइट डेंसर टू रेयर में एंटर कर रही है तो जो रिफ्रेक्टेड उसका पाथ चेंज होगा, उसका जो रिफ्रेक्टेड राइट होगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. और कभी कभी आपको बोर्ड में जब भी कभी क्वेश्चन आता है इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इट मीन्स लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. एंड ऑपोजिट केस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इट मीन्स लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू denser mediums. So the case of the light going from air into the glass and then into the air. Now I am going to show ki if this is an air and this is a glass slab and this is also an air. Now I am going to show you the third case. For example, this AB is a surface and this is a normal. When the light will fall on this AB surface, this is called as the incident ray.
and the angle made by the incident with the normal, that is called as the angle of incidence. When the light is going from the rarer to the denser medium, its path get changed. So this is called as the refracted ray, and the angle made by the refracted ray with the normal, it is called as the angle of refraction. Here the angle of refraction is smaller than the angle of incidence. Again, this same light, when it will fall on this another surface, again the normal is imaginary, you have to assume this is again a normal. So when this reflected ray will come out from this glass slab, so this is now called it as a emergent ray. It is called as the emergent ray. So students, and the angle made by the emergent ray with the normal, this is also a normal, this is also a normal, so that is called as the angle of emergence. So here I just want to say, is the emergent ray is parallel to the refracted ray? No. ये emergent ray क्या refracted ray के parallel है? No. But if you see over here, जो इंसिडेंट रे है, दिस इज अ इंसिडेंट रे. अगर आप इस इंसिडेंट रे को, इफ यू जस्ट प्रोड्यूस इट बैकवर्ड, if you just produce it backward, so this incident ray, this is the original path of the light ray, this incident ray is parallel to the emergent ray. ये हमें ये बताता है कि जो आपका ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है, when it will fall on these two surfaces, this is a AB and CD, these are the two parallel surface of the glass slab. तो जब ये ओरिजिनल पाथ ऑफ जो लाइट था इंसिडेंट रे, उसमें कितना चेंज आया, उसके पाथ में कितना चेंज आया, that is called as the refraction. And this is the perpendicular distance, this is the perpendicular distance between the incident ray, which is the original path of light, and the emergent ray. So this perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray, it is called as the lateral displacement. It is called as the lateral displacement of the emergent ray. That you always need to remember, emergent ray is always parallel to the incident ray, and the angle made by the emergent ray with the normal, it is called as the angle of emergence, and the angle made by the incident ray with the normal, it is called as the angle of incidence, and the angle made by the refracted ray, this is a refracted ray with the normal, it is called as the angle of refraction. और जो भी आपका lateral displacement होता है, it is a perpendicular distance, it is a perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray. Here I just explain, when the light emerges from a parallel side glass slab in a direction parallel with that in which the light enter the glass slab, that is the emergent ray is always parallel to the incident ray, and the perpendicular distance between the original path of the incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab, it is called as the lateral displacement of the emergent ray. Is it clear? Now the next topic is different type of angles I have to explain, which I already explained. One is called as the angle of incidence, angle of refraction, and angle of emergence. And the angle of incidence, the angle made by the incident ray with the normal at the point of incidence, it is called as the angle of incidence. And what is the angle of refraction? जो भी एंगल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ refraction. And what is the angle of emergence? The angle made by the emergent ray with the normal, it is called as the angle of emergence, which I already explained above. Now this is the case of light when falling perpendicular to the glass slab. अगर जब भी कोई लाइट ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर पड़ता है तो उसके पाथ में क्या चेंज आता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर. दिस इज अ ग्लास स्लैब ए बी सी डी. सो दिस इज अ सरफेस ए बी. व्हेन द लाइट विल फॉल ऑन दिस सरफेस परपेंडिकुलर, मीन्स बिकॉज नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है, और अगर लाइट भी परपेंडिकुलरली फॉल करती है तो इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट. इज इट क्लियर? तो जब भी कोई भी लाइट 90 डिग्री पे फॉल करती है लाइक नॉर्मल, सो इट विल गो स्ट्रेट, इट विल पास आउट स्ट्रेट थ्रू दिस ग्लास स्लैब बिकॉज देर इज नो एंगल मेड, सो दैट इज देर इज नो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, सो देर इज नो
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। जब भी कोई लाइट किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलरली पड़ती है, लाइक नॉर्मल, तो लाइट स्ट्रेट वे, बिकॉज दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्रैक्टिव रे, देर इज नो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एंड देर इज नो cause of refraction. So what are the effects of the refraction of light? So refraction of light produces many effects which we can observe in our daily life as follows. तो स्टूडेंट्स, देर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो आज आपने अपने आसपास बहुत देखा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ पेंसिल, आपके पास पेंसिल होता है, आप उस पेंसिल को एक ट्रांसपेरेंट, यू कैन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, एक कांच का ग्लास लो, उसमें उस पेंसिल को डिप करो, तो व्हाट यू सी, अगर आप उसमें देखेंगे तो यू विल सी द पेंसिल, आपको पेंसिल टू पेंसिल्स यू कैन सी इन दैट. इट इज़ ऑल ड्यू टू द रिफ्रैक्शन phenomena. I'll explain here. I'm just making a diagram. So suppose this is my pencil. This is a pencil. And this is a tip. This is the original pencil. And this is the tip of the pencil. Because this pencil, this is the original pencil, you can assume. And you know, and this is the original pencil. And you know, this is the, or you can assume it is an object. And it is dipped in the water. So this is the water. If you just dip it in the water, अगर आप इसको एक ऐसे पानी के ग्लास में रखते हैं ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी है, सो आपको कुछ, अगर आप उसको देखेंगे लाइट में, यू विल सी द टू पेंसिल्स इन दैट पर्टिकुलर ग्लास ऑफ वाटर एट द सरफेस. इज इट क्लियर? सो हाउ you can see it. Now I'm going to talk about. So this is an object. You can assume this pencil as an object. When the light is coming from the water, is it clear? So this is the incident ray. It is coming from this original pencil. So these are the two incident ray. So this is coming from this pencil, which is you assume as an object. और जब भी ये लाइट रेज वाटर से एयर में एंटर करता है, बिकॉज अगेन हेयर यू हैव अ टू मीडिया, दिस इज अ वाटर एंड दिस इज अ एयर. सो आई हैव टू अज्यूम दिस नॉर्मल एज इमेजिनरी. सो जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से जो पानी में डिप है, उसमें से लाइट will come out from this water to the air, so it will refracted away from the normal, it will refracted away from the normal. So these are the two refracted ray. So this is the angle of refraction, or this is your eye. If you are seeing through your eye, this is your eye. If you are seeing through your eye, what you can see, you have seen this is a refracted ray. और हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो भी इमेजेस बनाता है वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज है, और जो भी रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में होगा या रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में होगा वो रियल होगा, और जो चीज़ रिफ्रैक्टेड रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो वर्चुअल. इफ़ यू जस्ट प्रोड्यूस दिस रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड, इफ़ यू जस्ट प्रोड्यूस दिस रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड, सी हियर यू सी दिस रिफ्रैक्टेड रे, आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, सो दे विल मीट ओवर हेयर. So there is a virtual image of this pencil is created over here. So this is a virtual image of this pencil. और जो ये वर्चुअल इमेज से जो रेडिएशन आपकी आइज़ में एंटर करेगा, तो आपकी आइज़ के पीछे इमेज बनता है. So that's why, because it is all due to the refraction of light, you can see these two pencil, you can see these two pencils in your आई, बिकॉज आपका टू इमेजेस आपको दिखता है पेंसिल का. सो हेयर आई हैव रिटन अ स्टिक पार्टली immersed in water appears to be bent at the water surface to the reflection of light. Because it is all due to the reflection of light, you can see kind of two pencil in the water. Is it clear? And the second phenomena, you have second application of the refraction of light that you also see around you, that an object placed under water appears to be raised due to the refraction of light. For example, student, आपके पास कोई भी coin है, ठीक है, if you have a coin, if you can dip it into a water, that is a trough, again I am just showing, and this is a coin. Is it clear? This is a coin. If it is placed in water, this is a coin, I can say. You can assume this coin as an object. So if it is a trough or it is a basin,
but here there is no water, there is only one medium. So when the light will coming from this coin and it will going through and it will enter into our eye, so you can see there is only one coin. If you are just seeing through your eye, so you can see there is only one coin. But whenever you have again you have a pair of medium, अगर आपके पास कोई भी दो मीडियम है, अगर आप likewise suppose if you have a basin and you have this coin and you can dip this coin in a water, so this is a water surface and this is an air. So when the light is coming from this water to the air, so again there is a refraction of light takes place because there is a change in the path of light when the light goes from one medium to another medium, or because due to this refraction of light, so you can see this the virtual image is formed in the water. This is the virtual image of this coin which is formed in the water. So you can see the two coins in the water and this is the virtual image which is slightly above than the original. This is a virtual image of this coin which is formed in the water. हम आपको images के बारे में next videos में बताएंगे कि image कैसे बनता है. You need not worry because this is a refracted ray. जो भी image बनाता है refracted ray, रिफ्रैक्टेड रे की जो भी इमेज ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है वो हमेशा वर्चुअल है. तो एक उस कॉइन का एक वर्चुअल इमेज बनता है. इट इज़ ऑल ड्यू टू द phenomena of refraction of light because here we have a two media, there is a water and air. तो इसलिए आपको टू कॉइन्स दिखता है और आपको ऐसा भी लगता है कि जो वो जो कॉइन है इट इज़ स्लाइटली अबव देन द ओरिजिनल कॉइन. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट case, or you can say the next application of this refraction of light, a pool of water appears to be less deep than it actually is. It is always due to the refraction of light. अभी जब आप किसी होटल्स में जाते हो, पूल साइड पे जाते हो, तो आपको लगता है कि उसका जो सरफेस है वो ज़्यादा डीप नहीं लगता, आपको ज़्यादा गहरा नहीं लगता. कभी कभी आपको ऐसा जम्पशंस लगता है, आप कहते हो कि नहीं इट इज़ नॉट वेरी डीप, बट वो एक्चुअली बहुत डीप होता है. इट इज़ ऑल ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. यू कैन से इट इज़ लाइक अ इल्यूजन. यू कैन से फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम गोइंग टू टेक दिस इज़ अ पूल, यू कैन एज्यूम. तो दिस इज़ अ वाटर एंड दिस इज़ द एक्चुअल डेप्थ. दिस इज़ द एक्चुअल डेप्थ ऑफ दिस पूल. ये एक्चुअल डेप्थ होता है पूल का. And this is a water here. So again if you are seeing this pool, so the whenever the light is coming from this pool, so this is an incident ray, this is an incident ray, and whenever it will coming out from this pool, it will get, because again I am just normals are imaginary, they will refract it because there is a change in the path of light when the light is going from one medium to another medium, and due to the refraction phenomena this is a refracted light. And if you just produce this refracted light backward, so there is a virtual image of this pool surface is created which is slightly above than the actual depth of this pool. So whenever you are just looking into this, तो आपका जो virtual जो image बनता है उस से जो लाइट रेज आपकी आइज में एंटर करता है, तो इट एज्यूम लाइक कि उसका डेप्थ, बिकॉज इफ़ यू जस्ट एज्यूम दिस इज़ योर आई, तो आपको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा गहरा नहीं है. एंड इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. whenever we have a two media, that there is a change in the path of light takes place. and जो actual depth पोल का होता है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत गहरा होता है बट उसका जो सरफेस होता है इट इज़ स्लाइटली अबव, और वो एक इल्यूजन होता है, वो एक उसका एक उस सरफेस का एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करता होता है. एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये हम आपको इमेजेस रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाते हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट लॉ ये बोलता है द इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal at the point of incident, they all lie in the same plane. I'm making a diagram over here. So this is a glass slab. I'm going to take the example of a glass slab because जब भी हमें refraction
फिनोमेना को बताना है. Many times I am explaining, I am going to show two media. So this is a glass slab A, B, C and D. So this is a surface, on this the light will fall, and this is a normal is an imaginary which is always making a 90-degree angle to the surface. When the light will fall on this AB surface, so the angle made by the incident ray with the normal, it is called as the angle of incidence. And the when this incident light will enter into this glass slab, so there is a change in the path of light because it is a denser medium. So this is a change in the path of light, students. So this is called as the angle of refraction, the angle made by the refracted ray with the normal, it is called as the angle of refraction. So all these three ray, they all lie in the same plane. So that is called as the first law of refraction of light. The incident ray, and this is a normal, and this is a refracted ray, they all lie in the same plane. That is called as the first law of refraction of light. In second law, it gives the relationship between the angle of incidence and the angle of refraction. And this relationship was discovered by the Snell experimentally in 1621. That's why it is called as the Snell's law of refraction. Students, फर्स्ट लॉ में हमने ये बताया था, जब भी कभी भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करता है, सो देर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट. और हमने ये बताया था आपको, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. बट इन सेकेंड लॉ हम ये बताएंगे कि the angle of incidence and the angle of reflection, they are not equal. The angle of incidence, angle of refraction, they are not equals. And there was a, because it is all due to the change in the path of light which is called as the refraction. और इस relationship को Snell's ने explain किया था, that's why it is called as the Snell's law of refraction of light. And according to this law, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, it is constant for a given pair of medium. वो बोलते हैं whenever the light, स्नेल्स क्या बताते हैं, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एयर एज अ मीडियम लेते हैं और दिस इज अ ग्लास स्लैब, तो जब भी लाइट एयर से ग्लास स्लैब में एंटर करता है, सो दिस इज द एंगल, दिस इज द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and this is the sign of angle of refraction. It is always constant for a given pair of medium. उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो चेंज कितना होता है जब भी लाइट, अगर आप ये एज्यूम करते हो कि लाइट एयर से ग्लास में एंटर करता है, तो उसके पाथ में कितना चेंज आता है जब वो ग्लास में एंटर करता है. That can be explained by the sign of angle of refraction and sign of angle of incidence. So that is always a constant, and this constant is called as the refractive index. और जब refractive index को, if you want to understand more clearly, I'll take the one example. If the light is going from the air to a particular medium, तो जो refractive index होगा बेटा वो उस particular medium का होगा. मीन्स जब भी लाइट एयर से उस मीडियम में एंटर करती है, तो उस मीडियम में लाइट के पाथ में कितना चेंज आता है, एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, एंड here I am just going to write, this is the sign of the angle of incidence in air and the sign of angle of refraction in the medium. So here is the glass slab which I will take as a denser medium, and this is an air. So when the light is coming from the air to this glass slab, which you can take it as an example of a medium, so this is the sign of the angle of incidence and this is a sign of angle of refraction. और हमने बताया था स्टूडेंट्स, जब भी लाइट एयर से किसी भी डेंसर मीडियम में एंटर करता है, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा छोटा होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बिग होता है. सो हेयर दे हैव जस्ट शो इट हेयर. सो द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 37 डिग्री and the sign of angle of refraction is 24 degree. Means
जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो उसके पाथ में चेंज होता है, तो जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है वो हमेशा छोटा होता है देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. So if you just put the value of this sine 37 and 34, the value of the refractive index for that particular medium is comes out to be 1.5. Here जब भी light rarer to denser में होगा तो sine of incidence, or you can say angle of sine of incidence is always greater than the angle of the sine of refraction. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो उस मीडियम का होगा, क्योंकि लाइट के पाथ में कितना चेंज आया जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है, और दैट पर्टिकुलर मीडियम इफ यू एज्यूम इट एज अ ग्लास, सो दैट विल गिव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास. सो इन द अबव केस द लाइट इज मूविंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर because the sine of angle of refraction is always less than the sine of the angle of incidence, and it means when the light is refracted more in the glass, because आपको वो particular medium आपने glass लिया है, तो light is refracted more in the glass when coming from the rarer medium means air. इट मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स वो हमेशा नीचे वाले का होता है, कि जब भी लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है तो दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मीडियम, कि लाइट के पाथ में कितना चेंज आता है कि जब लाइट एयर टू ग्लास में एंटर करती है, एंड यू हैव एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. लाइकवाइज जब भी लाइट is going from the denser to a rarer medium, then the sine of the angle of refraction is always big than the sine of angle of incidence. Again I am making a diagram. There is a glass slab. So जब भी light glass slab से rarer medium में enter करती है, air में enter करती है, तो this is a incident ray. The angle made by the incident ray with the normal, it is called as the angle of incidence, or you can say sine of angle of incidence. और जब ये लाइट किसी रेयर मीडियम में एंटर करती है तो इसका पाथ में चेंज आता है and it will bend away from the normal, and this is the refracted ray, and the angle made by the refracted ray with the normal, it is called as the angle of refraction. Here the sine of angle of refraction is always greater than the sine of incidence. और बेटा जब भी आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर का होगा, नीचे वाले का होता है, बिकॉज आप ये बताओगे व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम, सो इट इज अ कांस्टेंट, and this constant is the refractive index, and this refractive index in this case is always for the air, means the sine of the angle of incidence upon the sine of the angle of refraction. Here the angle of refraction is always big than the साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जब भी लाइट ग्लास टू एयर यहाँ पर एंटर कर रहा है तो वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा नीचे, बिकॉज दिस इज अ कंपैरेटर, ग्लास इज अ कंपैरेटर. हम यही तो चेंज देख रहे हैं कि जब भी लाइट ग्लास से एयर में एंटर करता है तो लाइट के पाथ में कितना चेंज आता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज फॉर द substance which is placed below. As a you can say in the mass, this is a denominator and this is a denominator. तो डिनोमिनेटर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. सो दिस विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इन द अबव केस. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द स्पीड ऑफ लाइट. अभी हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताया है in terms of the sine of angle of incidence and sine of angle of refraction. अभी हम आपको refractive index in terms of speed of light बताते हैं, because I already explained लाइट का स्पीड डिफरेंट मटीरियल्स में, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, एंड द मटीरियल थ्रू विच द लाइट ट्रेवल उसको हम मीडियम बोलते हैं. और एज पर द क्लास 10th आपको 3 मीडियम्स हैं. वन इज you have a 3 mediums in your syllabus. One is gas, one is liquid and one is solid. Gas example is always air, which we call it as a rarer. और जो rarer medium में light का speed बहुत fast होता है. Solid you can assume as glass slab, it is a denser medium, और denser medium में light का speed बहुत ही कम होता है. और liquid is in between. And again I have written here, light travel fast in rarer medium, means the speed of the light is fast in air,
if it travels in a denser medium, its speed is slow. Means the speed of the light in glass slab is slow, and the speed of the light in air and vacuum is always 3 into 10 per 8 meter per second. And the refractive index in terms of the ratio of the speed of the light in these two media, I am just going to explain it over here. So when the light is moving from the air, which is a rarer medium, and to the glass slab, which is a denser medium. So स्टूडेंट्स, जब भी लाइट, बिकॉज दिस इज अ ग्लास स्लैब, आई एज्यूम इट इज अ डेंसर मीडियम, तो जब भी लाइट एयर से इस ग्लास स्लैब में एंटर करता है, तो इट मीन्स दिस इज एन इंसिडेंट रे विच विल फॉल ऑन टू दिस glass slab from air. So the angle made by it is called as the angle of incidence, and this is a refracted ray, and the angle made by the refracted ray with the normal it is called as the angle of refraction. but हम यहाँ पर स्पीड को कंपेयर करेंगे, तो जब भी लाइट एयर में ट्रैवल करता है तो लाइट का स्पीड एयर में बहुत ज़्यादा होता है, और जब भी लाइट एयर से किसी डेंसर मीडियम में एंटर करता है, लाइट का स्पीड बहुत ही कम हो जाता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द लाइट टू ट्रैवल. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज फॉर द ग्लास, बिकॉज यहाँ पर लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर होगा हमेशा नीचे वाले का होता है. मीन्स अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज नोटेड बाय दिस एन. तो व्हेन द लाइट इज मूविंग फ्रॉम द एयर टू द ग्लास, सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास. सो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर लिखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे लिखना है. सो एयर इज अ rarer medium and glass is the denser medium. If you assume in the mathematics, आपको maths में पता है, this is a numerator and this is a denominator. So denominator जो है आपका denser medium है, तो जब भी लाइट एयर से ग्लास में एंटर करता है विच इज़ अ डेंसर मीडियम, तो स्पीड का लाइट बिल्कुल कम हो जाएगा. द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी लेस. मैंने ये एरो नीचे किया, मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी लेस. ऑटोमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बिग हो जाता है. आपको पता है ना, जब भी आपका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा तो आपका वैल्यू उतना बिग हो जाएगा. तो हेयर आई हैव रिटन, जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, इट इज़ मोर देन 1, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि लाइट इज मूविंग फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर. इट मीन्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डेंसर मीडियम का होगा. इट मीन्स जब भी लाइट रेयर से एयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट का स्पीड बहुत कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से मोर होगा तो इट मीन्स लाइट इज मूविंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम. और वाइस वर्सा, जब भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से लेस होगा, मीन्स लाइट इज मूविंग फ्रॉम द डेंसर to the rarer medium. Means here if I'll take the reverse case, जब भी लाइट आपका ग्लास स्लैब से एयर में एंटर करता है तो इट मीन्स दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर. आपको ये बताना है स्टूडेंट, जब भी लाइट आपका ग्लास स्लैब से एयर में एंटर करता है, ग्लास स्लैब इज द डेंसर मीडियम and air is a rarer medium, तो automatically speed of the light in the air is very very high. और अगर आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू बिग होता है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम आएगा. तो जब भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इज लेस देन 1, you have to assume the light is moving from the denser to rarer medium. तो हम जब भी ये एक्सप्लेन करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं, जब आपके पापा एक ट्रैफिक वाले एरिया में सिटी में एंटर चलते हैं और सिटी से एकदम हाईवे में एंटर करते हैं, बिकॉज दिस ग्लास इज अ सिटी, व्हेन एवर इट यू आर कमिंग इन टू द हाईवे, तो आपका पापा का गाड़ी का स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम हो जाएगा. सो दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द हाईवे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा नीचे वाले का होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यू नीड टू हैव अ पेयर ऑफ मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम. और जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इज मोर देन 1, आई एम एक्सप्लेनिंग मेनी टाइम्स, इफ इट इज मोर देन 1 देन लाइट इज मूविंग फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम. जब भी आपके पापा खुले खुले एरिया से बहुत टाइट एरिया में एंटर करते हैं तो पापा का गाड़ी का स्पीड बहुत कम हो जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा. और जब भी आपके पापा बहुत रश वाले एरिया से
खुले खुले एरिया में एंटर करते हैं मीन्स डेंसर टू रेयरर, तो ऑटोमेटिकली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम हो जाएगा बिकॉज स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर इज मोर. इज इट क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इज लेस देन 1 मीन्स the light is going from the denser to the rarer medium, or there is no SI unit for the refractive index because अगर आप speed wise refractive index को explain करते हैं, आपका ऊपर भी you can express the speed, नीचे भी speed, तो there is no SI unit for the refractive index. And refractive index again I am explaining here, refractive index value is more if your teacher is going to ask you if the refractive index of a particular substance is more, means that substance is optically denser than the other from which the light is coming from. And if the refractive index's value is less than 1, that means the substance is optically rarer than the other from which the light is coming from. And again I am explaining in terms by taking of one example is A, B, C. If your teacher is going to give you the refractive index of the medium A is 2, refractive index of the medium B is 3, and the refractive index of the medium C is 4. And your teacher is going to ask you, you have to arrange in the increasing order of the density of the medium. तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ये देखना है कि इनमें तीनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन 3 केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इज मोर देन 1. तो इट मीन्स द लाइट इज मूविंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम. सो इन दिस केस जब भी लाइट आपका रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है मीन्स बिकॉज यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो इट मीन्स द लाइट इज मूविंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम. और हमने बताया था जब भी आपके पापा का गाड़ी डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो आपके पापा का स्पीड बहुत कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा. तो जितना डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज़ मोर, जितना डेंसिटी ऑफ द मीडियम जितना ज़्यादा होगा, जितना डेंसिटी ऑफ द मीडियम ज़्यादा होगा तो आपका स्पीड जो होगा लाइट का उतना ही कम होगा और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा. So you need to think one thing in these 3 cases A, B, C, the refractive index value is more than 1. It means the light is moving from the rarer to denser medium. तो जितना डेंसिटी मीडियम का ज़्यादा है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है बिकॉज स्पीड ऑफ द लाइट इज़ लेस. तो जितना आपका डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा. तो C का डेंसिटी सबसे ज़्यादा, then B and then A, because the refractive index of the C is high and the refractive index of the A is low. तो जितना refractive index का value ज़्यादा उतना density of the medium is more. And if the refractive index value is in all the 3 cases is more than 1, it means the light is moving from the rarer to the denser medium. So refractive index value जितना ज़्यादा होगा density of the medium is always greater. Again I am going to take the another example. If you have a 3 medium A, B, C, इनमें जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम A is 0.5, मीडियम B is 0.8, मीडियम C is 0.9. If your teacher is going to ask you which has a greater density, again you have to think in all the 3 cases the refractive index value is less than 1 means the light is moving from the denser to rarer medium. तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इट मीन्स जो लाइट है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में एंटर कर रही है, मीन जो आपका स्पीड ऑफ द लाइट होगा वो रेयर में बहुत ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बहुत कम होगा. और आप ये भी कह सकते हो कि जितना डेंसिटी कम होगा, जितना आपका डेंसिटी कम होगा स्पीड ऑफ द लाइट उतना मोर होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी अगेन इज यू हैव टू थिंक इन दिस केस ऑल्सो, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा आपका मीडियम उतना ही डेंसर होगा. But in all the 3 cases the light is moving from the denser to rarer. हमने आपको यही बताया स्टूडेंट, जितना आपका यहाँ पर रेयर मीडियम होगा, जितना रेयर मीडियम होगा उतना स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस.
और यू कैन से जितना रेयर मीडियम होगा उतना डेंसिटी मीडियम का कम होगा। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इज मोर हेयर, तो इट मीन्स द डेंसिटी ऑफ योर मीडियम इज वेरी हाई। सो सी का डेंसिटी ज़्यादा है देन बी देन ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in both the cases, if the refractive index value is high, the density is high. If the refractive index value is less, the density is less. Or refractive index can be of two types. One is absolute refractive index, one is relative refractive index. In absolute refractive index, A for absolute, A for air. जब आपका कंपैरेटर एयर है, जब आप ये कंपैरिजन करते हो, जब भी लाइट एयर से किसी भी मीडियम में एंटर करता है, तो यू हैव टू राइट द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर ऊपर एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम नीचे। सो दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। सो इफ योर कंपैरेटर इज एयर, जब भी लाइट एयर से वाटर में एंटर करता है, जब भी लाइट एयर से ग्लास में एंटर करता है, यू हैव टू थिंक अबाउट जब भी लाइट एयर से वाटर में एंटर करता है, जब भी लाइट एयर से ग्लास में एंटर करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water, absolute refractive index of glass. So if your comparator is air, then it is called as absolute refractive index. And in terms of relative refractive index, whenever you are comparing, when the light goes from one medium, that is medium 1, except vacuum or air, to another medium, medium 2, then the value of the refractive index is always for medium 2, and in this case that we can call it as a relative refractive index. relative refractive index स्टूडेंट वो होता है जब आपका कंपैरेटर एयर और वैक्यूम नहीं होते। जब आप कहते हो फॉर एग्जांपल इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम द वाटर टू ग्लास, so this will give you the refractive index of glass. So here your comparator is not air or vacuum. जब भी लाइट वाटर से ग्लास में एंटर करता है तो उसके पाथ में कितना चेंज आता है, उसकी स्पीड में क्या चेंज आता है, so that is called as the relative refractive index. And here I am just written over here, this is the refractive index of some common substances which is called as the absolute refractive index, and its value is always greater than 1 because here the light is going from the air to that particular medium, or air is always a rarer medium, and all these four mediums which I have explained here, they all are denser, और जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. So this is one example is eyes, means when the light is moving from air to eyes, the refractive index value is 1.31, and when the light is moving from the air to kerosene oil, the refractive index of the kerosene oil is 1.44, and when the light is moving from the air to benzene, the refractive index of the benzene is 1.55, and when the light is moving from the air to diamond, the refractive index of the diamond is 2.42. So among all the four, we have to understand one thing, जिसका refractive index जितना ज़्यादा होगा उतना denser medium है. So among all these four, the diamond is the most denser medium, and the refractive index of the diamond is very high, means diamond is the denser medium. And here again I am explaining, whenever we are talking about the absolute refractive index of the diamond, means when the light is moving from the air to the diamond, so you have to write it here, the speed of the light in air top and the speed of the light in diamond below, so which is equal to 2.42. So in conclusion I want to say, refraction is different for different light rays of Vibgyor, and it is also different in different media, बिकॉज सब मीडियम का डेंसिटी डिफरेंट होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम डिफरेंट होगा. एंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 मीन्स द लाइट इज मूविंग फ्रॉम द रेयर टू द डेंसर मीडियम, एंड दैट सब्सटेंस इज ऑलवेज ऑप्टिकल डेंसर, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन 1. And if the refractive index value is less than 1 means the light is moving from the denser to the rarer medium, or that particular substance जिसका भी refractive index है that is optically rarer medium. And more the refractive index,
In both the cases above, more is the density of the medium. Thank you. If you like my video, please subscribe my channel Science Classes at the rate Dr. Sonar Rajpal 123. In my next video, I am going to explain lenses and the images formed by the convex and concave lenses. Thank you.